मेरे पास स्पष्ट रूप से अनगिनत मिलियन वर्षस्तरीय मार्शल सोल अवतार हैं, लेकिन मैं स्वयं कभी उनका उपयोग नहीं करता। इसके बजाय मैं उन्हें एक के बाद एक 80,000 स्प्रिट सिक्कों के हिसाब से सस्ते में बेचता हूं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि मैं मार्शल सोल अवतार रेंटल सिस्टम से बंधा हुआ हूं। सिस्टम के अवतार पूल के अंदर हैं। हर तरह के मार्शल सोल अवतार 100 साल से लेकर 10 लाख साल पुराने, लेकिन मैं खुद उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं उन्हें केवल 80,000 स्पिरिट सिक्के प्रति पॉप पर किराए पर दे सकता हूं। सौभाग्य से हर बार जब मैं सफलतापूर्वक किसी को किराए पर देता हूं, मैं अपना खुद का एक स्थायी अवतार, साथ ही एक सोल रिंग रिवॉर्ड पैकेज भी अर्जित करता हूं। सिस्टम के लिए 2.5 करोड़ वर्षों के इंतजार के बाद मैंने सोटो शहर के ठीक बाहरी इलाके में दुकान स्थापित की। मैं खोलता हूं असली मार्शल सोल अवतार हॉल। अभी मेरी दुकान के बाहर जिज्ञासु आत्मा गुरुओं और व्यापारियों की भीड़ पहले से ही जमा हो गई है। एक मध्यम आयु वर्ग के सोल मास्टर और खुरदरे बदले कपड़े ब्रांड की ओर इशारा करते हैं। लकड़ी का नया चिन्ह मेरे दरवाजे पर लगा हुआ है। उसके चिल्लाने पर थूक उड़ रहा है, यहाँ तक कि अपने चेहरे पर उपहास को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। 15 मिनट 80,000 स्पिरिट सिक्के। बॉस, क्या पैसे की चाहत में आपका दिमाग खराब हो गया है? आत्मा को ही क्यों न लूटा जाए? हॉल, जब आप वहां हो, मैं बाहर की भीड़ को नजरअंदाज करता हूं जो मुझे ऐसे देख रही है जैसे यह कोई साइड शो हो। मैं बस काउंटर के पीछे एक रॉकिंग कुर्सी पर शांति से बैठा हूं, अपने सिस्टम पैनल को घूर रहा हूं। मार्शल आत्मा अवतार रेंटल सिस्टम। इसके नियम सरल और क्रूर हैं, लेकिन वे प्रभुत्व की भावना रखते हैं जो इस दुनिया के कानूनों से ऊपर उठती है। नियम 1, मेरे पास एक अवतार पूल है जिसमें हर यादृच्छिक मार्शल आत्मा शामिल है। 100 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने, हमलावर, स्पीडस्टर, नियंत्रक, समर्थन प्रकार, ये सभी। नियम 2, मैं स्वयं इन अवतारों का उपयोग नहीं कर सकता, मुझे इन्हें किराए पर देना होगा। किराए का शुल्क तय है, कोई अपवाद नहीं। 1/4 घंटे यानी 15 मिनट के लिए 80,000 स्पिरिट सिक्के। नियम 3, किराएदारों को शहर के अंदर लड़ने या हत्याओं को अंजाम देने के लिए अवतारों का उपयोग करने से मना किया जाता है। यदि वे यह नियम तोड़ते हैं तो मैं भी नहीं तोड़ता। एक उंगली उठाने की जरूरत है। सिस्टम स्वयं एक कार्मिक प्रतिक्रिया लाता है जिससे सभी 5 अपराधी आत्माएं बिखर जाती हैं और उनके लिए एक टूटी हुई भूसी बन जाती है। अरे बच्चे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारी यह निशानी, यह मार्शल सोल अवतार किराए की चीज के लिए है। यह कैसा घोटाला है? नकली आत्मा को बुलाने की तरकीबें। भीड़ में एक बगी आदमी गंभीर रूप से चिल्लाता है और उसके आसपास की भीड़ हंसी में फूट पड़ती है। 80,000 स्पिरिट सिक्के। यह 3 लोगों के एक सामान्य परिवार के लिए सोटो शहर में पूरी जिंदगी आराम से रहने के लिए पर्याप्त है, और आप चाहते हैं कि हम इसे 15 मिनट के लिए किसी छायादार स्थान पर बिताएं। केवल एक मूर्ख ही इसमें फंसेगा। मैं टिक गया। मेरी चाय की प्याली नीचे करो, उन पर नजर डालो। मेरी आवाज बिना किसी लहर के बिल्कुल शांत है। संकेत इसे काफी स्पष्ट रूप से बताता है। कोई धोखाधड़ी नहीं, निश्चित कीमतें, कोई मोलभाव नहीं। यदि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो चुपचाप चले जाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। बस मत करो। मेरी धूप को रोको। बगली आदमी का चेहरा गुस्से से चमक उठता है और वह बहस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। बगल में मौजूद कोई व्यक्ति उसे रोक लेता है। ठीक उसी क्षण भीड़ के किनारे पर थोड़ा सा हंगामा मच जाता है। मालिक, उस दुकान को देखो, कितना अजीब नाम है। असली मार्शल सोल अवतार के रूप में एक कुरकुरी, थोड़ी चंचल महिला आवाज मेरे कानों तक पहुंचती है। मैं ध्वनि की ओर देखता हूं और मेरी पलकें झपकती हैं। बस थोड़ा सा भीड़ के कुछ हिस्से और एक छोटा समूह सामने आता है। सामने एक लड़की चल रही है जो गुलाबी रंग की पोशाक में है और उसके बालों में एक विशिष्ट आभूषण है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जीवंत चिंगारी से चमकती हुई उत्सुकता से पढ़ रही थीं। मेरा संकेत, वह रेन है। उसके बगल में एक साधारण दिखने वाला लड़का साधारण नीले प्रशिक्षण कपड़े पहने हुए चलता है। उसकी कमर पर अजीब बेल्ट, 24 बिट चांदनी रात की बेल्ट, वास्तव में बताती है कि वह कौन है। देवेन। उनके पीछे एक चांदी के बालों वाला आदमी, पर्सी, उसकी चंचल आंखें हर जगह घूम रही हैं, और एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में किसी ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास झलकता है जो मानता है कि उसने इस दुनिया की हर चीज देखी है। ग्रैंड मास्टर थॉर्न, कितनी छोटी दुनिया है। श्रेक समूह अभी अभी सोटो शहर में आया है और वे पहले ही यहां घूम चुके हैं। ड्रेवेन अपनी जगह पर रुक जाता है, उसकी तेज नजर मेरी दुकान पर पड़ती है। आखिरकार मेरे संकेत पर पहुंचते हुए, जिसकी कीमत 80,000 स्पिरिट सिक्के हैं, उसकी भौं तुरंत सिकुड़ जाती है और अचूक अवमानना और शीतलता की एक झलक उसकी आंखों से गुजरती है। वह अपना सिर घुमाता है, उसे हिलाता है। रेन और पर्सी, उसकी आवाज तेज नहीं है, लेकिन इतनी तेज है कि आसपास के सभी लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, स्पष्ट रूप से सुन सकें। रेन, देखने की जहमत मत उठाओ। यह एक घोटाले के अलावा और कुछ नहीं है। यह खिलाफ जाता है। सोलमास्टर दुनिया में बुनियादी सामान्य ज्ञान। एक घोटाला। ड्रेवेन, आप कैसे बता सकते हैं? रेन उत्सुकता से पूछता है। ड्रेवेन अपनी बाहों को उसकी छाती के ऊपर घुमाता है। उनके स्वर में किसी ऐसे व्यक्ति का पूर्ण आत्मविश्वास झलकता है। समय के माध्यम से यात्रा की और जुड़वा मार्शल आत्माओं को धारण किया। एक सोलमास्टर की मार्शल आत्मा जन्म से ही आत्मा से जुड़ी एक सहज शक्ति में होती है, इसलिए ये तथाकथित अवतार बिना किसी असाधारणता के होते हैं। उनके पीछे दुर्लभ आत्मा कौशल है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकें। दूसरों को किराए पर देने की बात तो दूर की बात है। यह कोई सस्ता भ्रम या मामूली चालाकी होगी, जैसी ट्रिक के लिए 80,000 स्पिरिट सिक्के चार्ज करना। यह सोटो शहर के सोलमास्टर के साथ वध की प्रतीक्षा कर रहे लैंस की तरह व्यवहार कर रहा है। ऐसा कहने के साथ ही ड्रेवेन ने अपना उच्च और शक्तिशाली फैसला सुनाते हुए मुझ पर ठंडी नजर डाली। एक जगह ऐसी मूर्खों को लूटते हुए 3 दिनों के भीतर इसे निश्चित रूप से क्रोधित सोलमास्टर्स द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। पर्सी उसके बगल में सिर हिलाता है, अपना पेट पकड़ता है और जोर से हंसता है। हाँ, 80,000 स्पिरिट सिक्के। मैं अपनी पूरी जिंदगी सॉसेज बेच सकता हूं और कभी इतना पैसा नहीं कमा सकता। यह बॉस नकदी के लिए बेताब होगा। ड्रेवेन का अधिकार, यह स्पष्ट रूप से एक घोटाले का अड्डा है। मैं अपने में बैठता हूं। रॉकिंग चेयर चुपचाप ड्रेवेन के आत्ममहत्वपूर्ण नोएडोल आसन अंदर उपहास को देख रही है। ड्रेवेन, आपका संपूर्ण स्वधर्मी दोयम दर्जे का तर्क अन्य लोगों को मूर्ख बना सकता है, लेकिन मेरा सिस्टम आपके खिलाफ है, जो आपको कला और आपके पिछले जीवन, टैंक, संप्रदाय, छिपे हुए हथियारों के ज्ञान में चाहता है। आप कुएं के तल पर एक मेंढक के अलावा कुछ नहीं है। इस समय ग्रैंड मास्टर थॉर्न, जो अब तक चुप थे, भी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ड्रेवेन को एक सिद्ध नजर में गोली मारते हैं, फिर अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे पकड़कर महाद्वीप के अग्रणी सैद्धांतिक गुरु की मुद्रा में अपने शिष्यों को मौके पर ही व्याख्यान देने के लिए तैयार। द्रा बिल्कुल सही है, लेकिन वह केवल सतही तौर पर देख रहा है।
थॉर्न की आवाज गहरी और गंभीर है, जिसमें पूर्ण अधिकार का भाव है। मेरे शोध में मार्शल आत्माओं की 10 मुख्य ताकतें, मैंने एक बार उत्परिवर्तित मार्शल के बीच अंतर का पता लगाया। आत्माएं और झूठी मार्शल आत्माएं। यह तथाकथित अवतार वास्तव में एक बेहद खतरनाक झूठी मार्शल आत्मा है। थॉर्न मेरी दुकान के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए एक उंगली उठाता है। निर्णय सुनाते समय उसकी आवाज ठंडी होती है। तब में सबसे उदार परिदृश्य, भले ही वह वास्तव में एक भौतिक अवतार बना सके, इसके लिए उपयोगकर्ता की अपनी आध्यात्मिक शक्ति और उनकी सहज आत्मा शक्ति का उपयोग करना आवश्यक होगा। इस प्रकार का अलगाव अपरिवर्तनीय है। जिस क्षण अवतार को नुकसान पहुंचता है, उपयोगकर्ता को घातक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। सबसे अच्छा एक बेवकूफ में बदल दिया गया, सबसे खराब मौके पर ही मर गया। यह कोई किस्मत का खेल नहीं है, यह मौत की सजा है। जैसे ही थॉर्न ने बोलना समाप्त किया, आत्मा स्वामी जो अभी शो का आनंद ले रहे थे, एक तेज सांस लेते हैं और मेरी ओर उनकी नजरें मजाक से हटकर इसे पहनने और चर्चा करने की गहराई में बदल जाती हैं। तो यह ऐसा ही है, एक ग्रैंडमास्टर वास्तव में एक ग्रैंडमास्टर होता है। यह दुकान मालिक वास्तव में शातिर है, पैसे चुराने और लोगों को चोट पहुंचाने के लिए इस तरह की दुष्चाल का उपयोग कर रहा है। चलो चलें चलें, ऐसा दुर्भाग्य न होने दें। हम पर वार करो। धार्मिक आक्रोश की इस लहर का सामना करते हुए मैं पूरी तरह से शांत रहता हूं, खुद को समझाने की जहमत भी नहीं उठाता। थॉर्न के झूठे सिद्धांतों से प्रभावित लोगों के साथ बहस करना पूर्ण होगा। सांस की बर्बादी। थॉर्न ने मुझ पर एक लंबी गहरी नजर डाली, मानो चुपचाप असली मार्शल सोल अवतार हॉल का नाम याद कर रहा हो। उसकी आंखों में शुद्ध शोध जुनून की चमक झिलमिलाती है, जैसे वह पहले से ही देख रहा हो। किसी दिन मुझे अनुग्रह से गिरते हुए देखने के लिए तत्पर, बस उनके शानदार सिद्धांत को सही साबित करने के लिए आइए चलें। केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह की जगह हमारे समय के लायक नहीं है। हमारे पास देखने के लिए वास्तविक व्यवसाय है। शहर में थॉर्न स्पष्ट रूप से कहता है, फिर मुड़ता है और ड्रेवेन को दूसरों से दूर ले जाता है। जैसे ही ड्रेवेन मुड़ता है, वह एक बार फिर मेरी ओर देखता है। वह ऐसी आंखें देख रहा था मानो किसी को मरने के करीब देख रहा हो। सड़क ठंडी फिर भी कृपालु दया से स्पर्शित। मैंने देखा कि श्रेक समूह सड़क के अंत में गायब हो गया। मेरे मुंह के कोने पर एक अजीब वक्र खींच रहा था। 3 दिन में बंद एक घातक प्रतिक्रिया। फिर ड्रेवेन थॉर्न को खोजें। मुझे इसे देखना अच्छा लगेगा। जिस दिन मेरे अवतारों द्वारा आपकी बहुमूल्य आत्मशक्ति प्रणाली को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, क्या आपके वे आत्मसंतुष्ट नकली चेहरे उसी शांत संयम को बनाए रख पाएंगे? एक बार जब श्रेक समूह चला गया, तो थॉर्न की घातक प्रतिक्रिया की बात भीड़ में फैल गई। मेरे दरवाजे पर भीड़ ऐसे तितर बितर हो गई जैसे वे किसी प्लेग देवता से भाग रहे हों, और ठीक उसी तरह हर कोई चला गया है। सूरज डूब रहा है। यह धीमी सुनहरी रोशनी है जो सड़क पर अवतार हॉल की छाया को लंबे समय तक फैला रही है, जो अब पूरी तरह से खाली है। ठंडी हवा कुछ गिरे हुए पत्तों को हिला रही है, जिससे यह दृश्य महसूस हो रहा है। विशेष रूप से धूमिल। सिस्टम पैनल पर आज रात की बिक्री का आंकड़ा अभी भी मुझे शून्य की ओर घूर रहा है। अगर मैं एक सामान्य व्यक्ति होता, तो शायद मैं पहले से ही अपने जीवन के हर विकल्प पर सवाल उठा रहा होता, शायद पैकिंग भी कर रहा होता, आधी रात को भाग जाना। लेकिन मैं नहीं। मैंने चुपचाप काउंटर साफ कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि शहर एक ऐसी जगह है जहां हर तरह के लोग एक साथ मिलते हैं। खून से लथपथ एक शहर और हिंसा। यहां आखिरी मौके पर सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हताश लोगों की कभी कमी नहीं है। और निश्चित रूप से, जैसे सड़क गिरने से पहले उस अंतिम क्षण में आकाश पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। रात भर के लिए खामोश। मेरी दुकान का पुराना लकड़ी का दरवाजा जोर से खुल गया। खून की एक घनी मतली भरी दुर्गंध तुरंत हॉल में फैल जाती है। मैंने ऊपर देखा, एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है। उसका कवच फट गया है। टुकड़े। उसका बायां हाथ बगल में लटका हुआ था, स्पष्ट रूप से टूटा हुआ। पंजे का घाव इतना गहरा है कि उसकी छाती से लेकर पेट तक हड्डी फैली हुई दिखाई दे रही है। उसकी पैंट से खून टपक रहा था, छींटे पड़ रहे थे। फर्श पर बूंद बूंद करके गिराया गया। यह बर्बादी के कगार पर खड़ा एक आदमी है, मौत के किनारे पर एक अकेला शिकारी आत्मा गुरु है। उसकी सांसें उखड़ गईं। खून की कमी और शुद्ध हताशा से उसकी आंखें लाल हो गईं। वह सीधे मुझ पर चढ़ता है, मेरे पीछे की दीवार पर लटकी ड्रैगन के अधीन पट्टिका को पार करते हुए। उसकी आवाज टूटी हुई भौंकनी की तरह कर्कश और कर्कश थी, मानो अपनी आखिरी ताकत लगा रही हो। 80,000 स्पिरिट सिक्के, यह सब आपके हैं। मैं चाहता हूं एक अवतार किराए पर लें। मैं इसे मारने के लिए वापस जा रहा हूं। मैं उसके हाथ में खून से लथपथ सिक्कों की भारी बोरी को देखता हूं और आखिरकार दिन की पहली सच्ची मुस्कान मेरे चेहरे पर आ जाती है। असली मार्शल सोल में आपका स्वागत है, अवतार हॉल। मैं अपनी कुर्सी से उठता हूं और उसे अंदर आने का इशारा करता हूं। आपके सिक्कों ने आपको इस दुनिया में भाग्य को चुनौती देने के लिए सिर्फ 15 मिनट दिए हैं। काउंटर पर रखा सिक्के का थैला खून से लथपथ है, गहरा लाल। कपड़े से तेज धात्विक दुर्गंध आ रही है। मैं गांठ खोलता हूं और 8,000 स्पिरिट सिक्के के नोट गिर जाते हैं। चोंच के किनारे अभी भी मांस के टुकड़ों से लचीले हैं। 80,000, एक सिक्का भी कम नहीं। आदमी का शरीर है। पीड़ा से दोहरी झुक गई। उसका नाम गैरिक है, जो सोटो शहर में एक काफी प्रसिद्ध सख्त आदमी है, जो आमतौर पर स्टार के किनारे पर अपने जीवित शिकार आत्मा जानवरों को महान जंगल और सामग्री बेचने के लिए मजबूर करता है। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर आज रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो वह कल सुबह देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा। उसके अंदर जहर बहुत गहरा है। उसके घाव के किनारे पहले से ही बैंगनी काले रंग की भयानक छाया में बदल गए हैं। अच्छा। मैंने शांति से सिक्के हटा दिए। उसकी भीषण स्थिति को किसी भी अनावश्यक सहानुभूति को बाहर नहीं आने देना। इस दुनिया में सस्ती सहानुभूति सबसे बेकार चीज है। एक विचार के साथ मैं जगाता हूं। मेरे दिमाग में मार्शल सोल अवतार किराए की प्रणाली है। दिन योग्य किराएदार का पता चला। 80,000 स्पिरिट सिक्कों का एकल उपयोग किराया शुल्क काटा गया। अब आपके लिए एक यादृच्छिक अवतार बना रहा हूं। अवतार पूल एक अंधेरा सोने का पहिया, जिसे केवल मैं ही देख सकता हूं, खाली जगह में तेजी से घूमता है। सदियों पुरानी, सहस्राब्दी पुरानी, 10,000 साल पुरानी आकृतियां एक के बाद एक बेतहाशा चमकती रहती हैं। कुछ सेकंड बाद पॉइंटर लॉक हो जाता है और लैंडिंग हो जाती है। एक उग्र शेर की छवि, उसका पूरा शरीर धधकती लाल ज्वाला में धधक रहा था। पूरा ड्रा करें। बधाई हो, यह किराए का अवतार 2000 साल का आक्रमण प्रकार मार्शल सोल लॉ शेर राजा है। अवधि 15 मिनट। काउंटर के नीचे से मैं कुछ ऐसी सामग्री से बना एक काला लकड़ी का टोकन निकालता हूं जिसे मैं पहचान नहीं सकता और इसे हल्के से थपथपाता हूं। धधकती लाल रोशनी की एक रेखा तुरंत उसमें प्रवाहित होती है और टोकन पर एक ज्वलंत शेर के सिर की छवि दिखाई देती है।
इसे कुचल दें और लौ शेर राजा अवतार आपके लिए 15 मिनट तक लड़ेगा। यह अवतार 2000 साल के स्पिरिट जानवर की पूरी युद्ध शक्ति का उपयोग करता है। अपनी स्थिति से पूरी तरह अप्रभावित, मैं टोकन को गैरिक की ओर सरकाता हूं। मेरा स्वर बिल्कुल सपाट होता है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि अवतार को नुकसान होता है तो इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार 15 मिनट ऊपर है, यह तुरंत गायब हो जाता है। आपको कामयाबी मिले। अपने एकमात्र काम करने वाले हाथ से अपने दाहिने गैरिक ने टोकन को कसकर पकड़ लिया, जैसे एक डूबता हुआ आदमी अपनी आखिरी जीवन रेखा को पकड़ लेता है। उसकी रक्तरंजित आंखें मुझ पर टिकी रहती हैं और पूरी तरह वह दांत पीसकर बाहर निकाल देता है। अगर मुझे पता चला कि तुम भूत बनकर भी मुझे धोखा दे रहे हो तो मैं वापस आऊंगा और तुम्हारी इस टूटी फूटी दुकान को तोड़ दूंगा। इसके साथ ही वह अपने टूटे हुए शरीर और लड़खड़ाते लंगड़े को वापस पानी में खींच लेता है। बाहर अंधेरा। मैंने एक झटका दिया और उसके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। जहां तक मौसम की बात है तो वह जीवित रहता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वह उन भाग्य विरोधी 15 मिनटों का उपयोग कैसे करता है। सोटो शहर के बाहर 30 मील दूर सूर्यास्त वन के किनारे पर गैरिक घने प्राचीन पेड़ के सामने झुक गया और मुंह में काले खून की उल्टी कर रहा था। उससे ज्यादा दूर नहीं, 30 फीट से ज्यादा लंबा एक सांप। इसका पूरा शरीर भूतिया हरे रंग से ढका हुआ है। तराजू। 1000 साल पुराना वेनोम फैंग अजगर एक चट्टान पर कुंडली मारे बैठा है। यह लाल जीभ टिमटिमा रही है। इसी जानवर ने न केवल अपने सभी साथियों को मार डाला, इसने पूरे रास्ते उसका पीछा किया। अजगर का जहर अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है और इसका पित्ताशय काले बाजार में एक गर्म वस्तु है। यदि वह इसे मार सकता तो वह सैकड़ों हजारों स्प्रिट सिक्के कमा सकता था। विशाला अजगर स्पष्ट रूप से खत्म हो चुका है। धैर्य। इसकी मोटी पूंछ जोर से नीचे गिरती है और जमीन पर बिजली की एक हरी रेखा फट जाती है जो सीधे गैरिक के चेहरे पर गिरती है। दाई। गैरिक के चेहरे पर पीड़ा झलकती है जैसे ही वह अपना अंतिम उंडेलता है। शक्ति और उसके हाथ में मौजूद काले टोकन को कुचल देता है। अंधेरे जंगल में बिना किसी चेतावनी के एक गगनभेदी विस्फोट होता है। आसपास का तापमान एक पल में दर्जनों डिग्री तक बढ़ जाता है। हवा में नमी का वाष्पीकरण हो रहा है। टूटे हुए टोकन से लाल आग की एक चकाचौंध करने वाली ज्वाला निकलती है जो तेजी से गैरिक के सामने आकार लेती है। यह एक विशाल जानवर है, लगभग 16 फीट लंबा। यह संपूर्ण है। शुद्ध अग्निगुण आत्मशक्ति से लिपटा हुआ शरीर। वास्तव में एक विशाल प्राणी। यह 2000 साल के स्तर का भयानक है या एक क्रश बाहरी रूप से एक शारीरिक शक्ति की तरह है। वेनोम फैंग अजगर बीच में ही जम जाता है। असली लगभग मानवीय भय उसकी आंखों में चमक रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वंश और पद का पूर्ण प्रभुत्व उस पर हावी हो रहा है। टेरिटोरियल अलग। गैरिक दहाड़ता है, आधा पागल, लौपड़ा हुआ। राजा अवतार को गैरिक से किसी जटिल मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। यह सहज रूप से अपने सामने शिकार को तेज धमाके के साथ पकड़ लेता है। किंग में रोशनी एक लकीरदार उल्कापिंड में बदल जाती है। यह विशाल है। पंजे चिलचिलाती गर्मी ले जाते हैं और अजगर के बेशकीमती जहर लेपित तराजू को तुरंत टुकड़ों में काट देते हैं। युद्ध नहीं, यह बिल्कुल भी लड़ाई नहीं है। यह एक तरफा कत्लेआम है। 3 मिनट से कम समय में कभी न रुकने वाले 1000 साल के वेनोम फैंग अजगर के महत्वपूर्ण स्थान को फ्लेमलाइन किंग ने काटकर साफ कर दिया है। उसे जलाकर जले हुए भूसे में बदल दिया गया है। हालांकि इसकी सबसे मूल्यवान मूल सामग्री अभी भी बची हुई है। अखंड। गैरिक अपने सामने भव्य ज्वाला में लेटे हुए राजा को देखते हुए खाली सीढ़ियां चढ़ता है, फिर नीचे जमीन पर पड़े अजगर के शव को देखता है। उसके अंदर अत्यधिक खुशी और जीवित रहने की राहत एक साथ मिल जाती है और वह मैं हंसी फूटने से खुद को नहीं रोक सकता। उसके चेहरे से आंसू खून में मिलकर बह रहे थे। यह वास्तविक है। यह वास्तव में वास्तविक है। मैं जीवित हूं और मैं अमीर हूं। अगली सुबह जैसे ही सोटो शहर पर भोर हुई, समाचार का एक विस्फोटक टुकड़ा अपने विकसित पंखों की तरह शहर के हर बड़े और छोटे आत्मा गुरु में तुरंत फैल जाता है। शराब खाने में वे गैरिक नाम के उसके भाग्य आत्मा गुरु की निंदा करते हैं। मौत के कगार पर 1000 साल पुराने जहर फैन अजगर को मार डाला और उसके अक्षुण्ण पित्ताशय और जहर ग्रंथियों को काले बाजार में आश्चर्यजनक 400,000 स्पिरिट सिक्कों के लिए बेच दिया और उसके द्वारा खींचे जाने का कारण यह चमत्कारी बदलाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि शहर के बाहरी इलाके में उस अवतार पर हर कोई हंस रहा था। उसने लकड़ी के एक छोटे से टोकन पर 80,000 स्पिरिट सिक्के खर्च कर दिए। 80,000 को 400,000 में बदल दिया गया और उन्होंने अपना जीवन बचा लिया। इस दुनिया में हताश लोगों की कभी कमी नहीं होती है और ऐसे चतुर लोगों की कभी कमी नहीं होती है जो किसी को देखते ही अच्छा दाव लगाना जानते हो। एक बार लाभ मिल जाता है। इतना बड़ा तथाकथित सामान्य ज्ञान कोई मौका नहीं देता। सोटो शहर के सबसे बेहतरीन छोर पर स्थित एक मिठाई में माहौल तनावपूर्ण लगता है। ग्रैंड मास्टर में 7 कंधा उचकाते हुए थॉर्न एक लंबी मेज के चारों ओर बैठे हुए थे। आज सुबह इकट्ठा किए गए एक बुद्धिमान स्क्रॉल के रूप में मेज पर फैले हुए 2000 साल के स्तर का ज्वालारेखा राजा अवतार कहीं से भी प्रकट होता है, पूर्ण स्वतंत्र युद्ध क्षमता के साथ लड़ता है। युद्ध समाप्त होते ही गायब हो जाता है। उपयोगकर्ता को किसी भी आध्यात्मिक प्रतिक्रिया से पूरी तरह अप्रभावित छोड़ना। पुस्तक के प्रत्येक शब्द को ध्यान से देखते हुए थॉर्न के आंसू, उसका वृद्ध चेहरा अत्यधिक सदमे से हिल रहा था। उसके गाल ऐसे जल रहे थे मानो उसे अभी अभी थप्पड़ मारा गया हो। कल ही सोन की दुकान के ठीक बाहर उसने पूरे विश्वास के साथ घोषणा की थी कि यह एक झूठी मार्शल आत्मा थी जिसकी घातक प्रतिक्रिया हुई थी, और आज वास्तविकता ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। यह मार्शल आत्माओं की मेरी 10 मुख्य शक्तियों के मौलिक तर्क का खंडन करता है। एक मार्शल आत्मा संभवतः कैसे हो सकती है? आत्मा गुरु के शरीर से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है और माल के टुकड़े की तरह किसी और को सौंप दिया जा सकता है। थॉर्न अपनी सीट से उठकर मेज पर दोनों हाथ पटक देता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं पागलपन के करीब कुछ के साथ। यदि इस तरह की प्रणाली वास्तव में अस्तित्व में है तो पूरे महाद्वीप की आत्मा मास्टर रैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से उलट जाएगी। नहीं, मुझे इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। वह आदमी छिपा होगा। मार्शल सोल म्यूटेशन का अंतिम रहस्य। उसके बगल में ड्रेवेन अपनी कुर्सी पर बैठा है। बाहर से तो वह अभी भी शांत है, लेकिन उसके घुटनों पर रखे हुए हाथ और भींच गए, कस गए और कस गए, उसे पता भी नहीं चला। पूरी तरह से स्वतंत्र युद्ध शक्ति वाला एक अवतार। ड्रेवेन की बैंगनी राक्षसी आंखें उनकी जेबों में हल्की हल्की हलचल करती हैं। उसका दिमाग विचारों के तूफान के साथ मंथन करता है। ताम संप्रदाय में अपने पिछले जीवन में उसने कल्पना की जा सकने वाली हर रहस्यमय कला का अध्ययन किया था, लेकिन इससे अधिक चमत्कारी कभी कुछ नहीं हुआ। यदि आप इन अवतारों के रहस्य को समझ सकें तो इसे उनकी अपनी जुड़वा मार्शल आत्माओं में मिला दें, शायद इसे उनके साथ जोड़ भी दें। उसके छिपे हुए हथियार।
ड्रेवेन की नजर A ruthless pragmatist. Yesterday, he thought this was a scam simply because he didn't believe anyone could break the rules. But today, with the truth staring him in the face, his first instinct is no longer doubt, it's desire and possession. Master, a power that defies the laws of nature like this must have some dark, hidden method behind it. Draven speaks slowly, his tone carrying a note of noble righteousness. That shopkeeper is just a great soul master, and yet he wields a power strong enough to shatter the balance of the entire soul world. If it fell into the wrong hands, the consequences would be unthinkable. As a legitimate academy, we at Shrek have a duty to uncover the true nature of this power. If we can bring it under our own control, that would be the most responsible thing for the continent. Thorn nods approvingly. Dre, you're right. For the future of the soul world, this destabilizing factor is something we must step in on. Sitting in the corner, Ren frowns slightly. She doesn't quite know why, but hearing this news about the Avatar Hall, as a 100,000-year spirit beast in human form, she instinctively feels a flicker of unease. This power, to summon spirit beast apparitions at will, makes her feel like her own secret has nowhere left to hide. Draven, that shopkeeper, something tells me he's dangerous. Yesterday, the way he looked at you, he wasn't afraid of you at all, Ren says quietly. Draven lets out a cold laugh. He's not afraid because he doesn't know any better. Here in Soto City, strength is the only thing that matters. Once we've figured out exactly what he is, he'll learn soon enough there's always someone stronger. Meanwhile, at the center of Soto City, inside the towering building that stands as a symbol of absolute power and status, the Spirit Hall branch. In a dim office, the steward of Soto City's Spirit Hall flips through a report stamped top secret, brow furrowed tight. 15 minutes, granting combat power that leaps across entire realms. A method like this, even the elders of Spirit Hall headquarters have never heard of anything like it. The steward closes the scroll, looking down at several black-clad agents kneeling before him, his voice ice-cold. Send men in immediately, disguised as ordinary soul masters, to scout out that shop. I want to know everything about this Soren, his background, how these avatars' energy is structured, and how many avatars he can supply each day. My lord, and if he refuses to cooperate? One agent asks quietly. Test him first, then bring him under our control. A flash of ruthlessness crosses the steward's eyes. If a strategic asset like this can't be made to serve Spirit Hall, then we crush it outright. Spirit Hall's authority cannot allow any variable beyond its control to exist. Understood. By the time the sun rises fully, its light burns away the thin morning mist over Soto City's outskirts. I stretch, strolling down from my upstairs bedroom at an easy pace. The system already alerted me last night that Garrick's hunt was a complete success, closing out my very first transaction perfectly. Following the rules, the system is about to hand me my first permanent avatar and soul ring reward package, but right now, I'm not in a hurry to check it, because there's way too much noise coming from outside. Clank! I pull open the old wooden door of the Avatar Hall, and blinding sunlight instantly floods into the hall, and in the next second, I freeze. The street that was empty and dead yesterday is now completely jammed, packed solid with people. At a rough glance, there must be hundreds of soul masters of every kind crammed right outside my door. Their eyes gleam with fanaticism, greed, and desperate urgency, just like sharks who've caught the scent of blood. The moment they see me open the door, the crowd erupts. Boss! Old man! Give me an avatar! I'll pay 100,000 spirit coins. Let me rent first, move it! I've been stuck at level 30 for 3 years, I'll pay 150,000. Boss, I need to rent a strength-type avatar to go hunt spirit beasts in Stardew Great Forest. Quit shoving, my coin sack fell on the ground. Watching this wild, frenzied, absolutely chaotic scene unfold before me, I let a satisfied smile pull at the corner of my mouth. See, there's no such thing as unbreakable common sense in this world. As long as the reward is tempting enough, even the proudest soul masters will line up like housewives fighting over discounted eggs, shoving each other to get to the front. And this is just the beginning of my harvest. Watching that crowd outside, eyes ablaze, waving fistfuls of spirit coins, I refuse to let this sudden wave of frenzy rush me off my feet. I clear my throat and let my voice, laced with soul power, cut through the roar of the crowd. I'll only say this once. Rule 1, form a line. Rule 2, 15 minutes per rental, 80,000 spirit coins. No credit, no exceptions. Rule 3, no using an avatar to fight or assassinate anyone inside Soto City. Break it, and you die. On that last word, I deliberately let a sliver of the system's authority bleed through, and an invisible chill sweeps through the whole crowd, silencing the restless mob in an instant. Quite a few people shiver without even realizing it. Establishing dominance works wonders. In a world where only the strong survive, the more mysterious and commanding you appear, the more unfathomable they'll believe you to be. Soon enough, the first paying customer steps up to the counter, a seasoned great soul master who's been stuck at level 30 for years. His hand trembles as he hands over 80,000 spirit coins, his eyes burning with desperate hope for a breakthrough. I deduct the fee with practiced ease, and from the avatar pool draw a random millennium-level rampaging giant bear avatar for him. I watch him sprint out of the city, token in hand, and in my mind, that long-awaited system chime finally rings. Ding. Congratulations, player, on completing your first transaction. Settling bonus from Renter Garrick's positive review. Special high-tier reward issued. A century-level permanent avatar, the Windwolf, now stored in your personal space. Random soul ring package delivered. The instant the thought settles, a light, wild wind attribute power surges through every limb of my body.
My once weak Azure Snake martial soul seems nourished by some outside source of power. Its soul power circulating noticeably faster now, and the bottleneck holding me at level 25 even shows the first signs of cracking. Whenever I choose to, I can now summon a century-old wind wolf, one that obeys me completely, costing me none of my own spirit power to fight for me. And as the orders keep piling up, my hidden strength will only keep growing. Boss, what are you spacing out for? Hurry up, it's my turn. Right as I'm quietly savoring the wind wolf's power, a rude voice cuts through my thoughts. A round, chubby man rudely shoves aside several low-level soul masters waiting in line, swaggering his way right up to the counter. With a messy shock of red hair on top, he looks like a steamed bun fresh out of the basket, steam practically rising off him. His small darting eyes flicker with unmistakable impatience and greed. Roddy. I glance at his face, flush red from the wicked flames simmering inside him, and immediately understand. This guy must have heard about the avatar's incredible effects, and wants to borrow a high-tier water or ice attribute avatar to use as a sparring partner, forcibly suppressing the wicked flame burning inside him. Boss, I hear you can whip up a martial soul avatar? Roddy plants both hands on the counter, his beady eyes sizing me up. This big guy hit a little snag in his training lately. I urgently need a high-tier ice attribute sparring partner. But well, he rubs his fingers together, grinning slyly, putting on an expression he clearly thinks makes him look tough. 80,000 spirit coins? That's ridiculous. Tell you what, give me a free trial run, and if it works well, this big guy will go back and sing your praises all over the academy. Everyone at Shrek Academy is a monster prodigy. Do that, and I guarantee your business will boom. So what do you say, friends? The soul masters waiting in line hear the word free and immediately settle in, ready to watch the show. I look at Roddy's greasy, entitled expression, not even bothering to force a polite smile. No deal. I raise my eyes, staring at him with a cold, flat gaze. The sign outside says it plain as day. 80,000 spirit coins. No haggling. No trials. Pay, take the token. No money, then step aside. Don't block the line for the customers behind you. Roddy's grin freezes on his face, wicked flames surging straight to his head. Here in Soto City, leaning on the Shrek Academy name and Flen's protection, he's used to throwing his weight around, and he's never had this kind of cold shoulder before. Soren, don't push your luck. Roddy slams his fist on the counter, faint purple-red flames flickering across his body. This big guy offering to try your product is you getting lucky. Try me, and I'll burn this rundown shop to the ground. Before he can even finish, the system's built-in shop defense triggers instantly. An unbelievably terrifying pressure, as if from some ancient primordial beast, crashes down like a mountain collapsing, slamming hard onto Roddy's shoulders. Thud. Roddy doesn't even get his martial soul fully released before his knees buckle, dropping him straight to the floor in front of the counter. The wicked flame on his body is instantly crushed by the pressure, his whole body feeling like it's plunged into an ice pit, cold sweat soaking through his back in an instant. The rules here are the rules. I look down at him from above, my tone flat. Release your soul power in my shop one more time, and I'll cripple your martial soul for good. Now get out. Roddy's eyes go wide with terror, and he scrambles out of the avatar hall on all fours, not even brave enough to fire off one last threat, drawing a wave of roaring laughter from the soul masters in line. Watching his humiliated retreat, I let out a cold laugh. The Shrek 7, in my house, even a dragon has to coil up nice and quiet, and even a tiger has to lie down and behave. Meanwhile, inside a discreet inn somewhere in Soto City, the mood is unusually tense. Thorn paces back and forth across the room, hands clasped behind his back, brow furrowed deep. Draven, Leif, Percy, and the others sit gathered around a table, every face grim and serious. Roddy still hasn't come back, but they've already received a full report of Garrick's kill against the 1,000-year Venomfang Python. Master, what exactly is going on? Can a martial soul really be extracted and rented out? Leif slams a fist on the table, disbelief written all over his face. If this is real, then what does that make the rest of us grinding through years of training? Someone spends 80,000 coins and suddenly has 2,000-year combat power. That's just flat-out cheating. Thorn stops pacing, draws a deep breath, a flicker of gold flashing in his aging eyes. A variable, one powerful enough to reshape the entire balance of this continent. Thorn's voice drops low, carrying the fevered edge of a man who thinks he understands it all. I studied that battle report carefully. That Flame Lion King avatar doesn't just carry a full set of Millennium-level soul skills, it even has genuine combat instincts of its own, which means as long as someone has the money, even a support-type soul master with zero combat ability could instantly become a top-tier attack fighter. He turns his head, fixing everyone with a burning stare. Do you understand what this means? The Continental Elite Soulmaster Academy Tournament. At the mention of that name, everyone's expression tightens at once. In that tournament, if any academy could control a resource like this, it would be the same as having an endless supply of tactics and hidden trump cards, able to counter any opponent's martial soul attribute by renting the perfect counter avatar, whenever, wherever. Thorn says each word deliberately, both hands clenched tight. Shrek Academy's goal is the championship, so this avatar hall, we must take control of it. Even if we can't seize it entirely, we have to understand exactly how it works, and put it to our own use. Draven, silent until now, lifts his head, a flash of light crossing his purple demon eyes. Master's right. Draven's tone stays calm, but beneath the surface, deep greed and calculation churn. A power like this,
defying the laws of nature, held by a greedy shopkeeper, is downright irresponsible to the whole soul world. If we could fuse this avatar mechanism with my Tang sect hidden weapons, or if I could break down how its energy cycles back maybe, I could find a shortcut to resolving the conflict between my twin martial souls. In Draven's mind, anything valuable only reaches its full potential in the hands of a righteous man like himself. As for me, in his eyes, I'm just some lucky nobody who stumbled into a fortune. If he simply applies his Xuanqian art to probe the underlying logic of these avatars, and copy it directly, why would he waste that kind of money? Right at that moment, the door bursts open, and Roddy stumbles in. Filthy, disheveled, sweat pouring off him, shouting furiously the moment he's through the door. I'm furious. That shop owner Soren is out of his mind. All I wanted was to borrow an avatar to spar with, and he humiliated me, telling me to get out in front of everyone, then crushed me with some kind of pressure attack. Draven, Leaf, you have to get revenge from me. Listening to Roddy's whining complaint, Draven's expression darkens instantly. Soren, huh? He dares to humiliate one of our own Shrek people like this. Draven scoffs coldly, fingers curling slightly beneath his sleeve, a few bone-piercing needles already sliding quietly into his palm. It seems this so-called system of his is just relying on some special soul-channeling device after all. Once I find the right moment, I'll pay him a visit myself. I want to see just how far that little sleight of hand of his can hold up against my eyes. Night falls once more over Soto City, and the Avatar Hall's runaway success has drawn not only the Shrek Group's greedy attention, it's also struck at the core interests of Soto City's local power brokers. South of the city, at an underground combat training ground, the Iron Blood Arena. In the dim office of the owner, thick cigar smoke hangs heavy in the air. Brogan, owner of the arena, slams a bill down hard onto the table in front of him, his heavy jowls trembling with rage. Down 70%, a full 70%, Brogan roars at the men standing before him. This time of day usually our fighting rings would be packed solid. Today, not a single soul. Every one of those cheapskate soul masters has run off to line up at that damned Avatar Hall on the outskirts. Boss, please calm down. That kid's avatars really are something else. Word is you can even take them out hunting spirit beasts. Our regular sparring partners just can't compete with that, one of the men says, trembling. Nonsense. Cutting off a man's income is like killing his own parents. On my own turf, right here in Soto City, he thinks he can hog all the business for himself? He should take a good look in the mirror. A vicious glint flashes in Brogan's eyes. He's built his whole reputation on nobody's ever died there, hasn't he? Go find the city's rumor mongers, spread word tonight, tell them what that Avatar Hall really uses isn't martial souls at all, but some vile technique that drains the souls of the living. Anyone who's rented an avatar looks fine on the surface, but their spirit power is actually being drained dry, and within half a month, they'll turn into mindless puppets under his control. Brogan smiles, cold and sinister, crushing his cigar out hard in the ashtray. Once the rumor spreads, let's see which of those soul masters so eager to keep their skin still dares go anywhere near his shop. Once his business dries up, I'll send men to smash his sign to pieces and take his secrets for ourselves. A conspiracy targeting the Avatar Hall quietly brews in the shadows of Soto City. Meanwhile, I sit in my rocking chair, leisurely counting up today's earnings, while also checking the random soul ring package the system just delivered. Under the moonlight, Soto City is destined for anything but peace. The next morning in Soto City should have been the busiest hour of the day, but the street outside my Avatar Hall today is eerily, unsettlingly quiet. No long lines. No frenzied soul masters waving handfuls of spirit coins. The occasional low-level soul master passing by looks at my shop like it's some man-eating monster, not only walking a wide circle around it, but whispering and pointing to each other as they go. I hold a cup of hot tea, leaning against the doorframe, and call out to a familiar face who once stood in my line. What's going on? Nobody showed up today? The great soul master flinches all over, backing away 3 whole steps, waving his hands with an awkward forced laugh. Boss, come on, don't mess with us. The whole city's saying that whatever this Avatar Hall of yours is really running on, it's some dark technique that drains people's souls. They say everyone who's rented an avatar seems fine right now, but their spirit power's already been hollowed out, and inside half a month, there'll be nothing but empty shells. We may not have much money, but we'd still like to keep breathing a few more years. With that, he takes off like he's fleeing a plague, disappearing in the blink of an eye. I take a sip of tea, a cold smirk tugging at my lips. So that's what this is. Cutting off a man's income, apparently is worth striking back over. Yesterday I stole Iron Blood Arena's business, and today the counterattack arrives. This rumor is crafted well. It strikes right at Soul Master's deepest fear, spiritual backlash. After all, in the traditional beliefs of this continent, apart from soul bones, any power gained out of nowhere always comes with a devastating price. And Thorne's so-called theory, the fatal martial soul backlash, provides the perfect breeding ground for rumors like this. If this were an ordinary business, facing a citywide smear campaign like this, I'd probably be panicking like an ant on a hot skillet. But I'm different. In the face of absolute strength and hard facts, any rumor is nothing more than a paper tiger. I turn and walk back into the shop, pull out a bigger, brand new wooden sign, pick up a brush and paint out a bold line of text with flowing strokes, then, with a loud bang, slam it up right at the shop's front door. Rumors stop with the Y's. Today only, free 3-minute trial event. No coins needed, no cost at all. See for yourself, and crush the rumors. The moment the sign goes up, the crowd who had been watching from a safe distance erupts into murmurs. Free? No cost at all? This shop owner has to be out of his mind.
That's power that can cross entire rank levels. Maybe he knows the scam's falling apart, and he's trying to bait people back in with a free trial. Only a fool would go for it. The crowd keeps buzzing with argument, but greed is simply human nature. Lured by the word free, some start working up the nerve to inch closer.